Okay. Hello, everyone. Very good afternoon. Hello, students, mentors, teachers. Hello, everyone. We are today with a session with the networking and operations, and we have joined by a very special guest, Mr. Utkarsh Amitabh. नमस्कार आप सभी को सभी स्टूडेंट्स मेंटर्स टीचर्स को मैं आशा करता हूं कि आप अपनी टिंकरप्रेन्योर की जर्नी में बहुत उत्साहितता के साथ आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। हम डेली काफ़ी सबमिशंस ले रहे हैं और हम देख रहे हैं बच्चों में उतना ही एंथुजियाज्म है जितना स्टार्टिंग में था, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो अभी और डिले ना करते हुए विदाउट फर्दर अडू आई एम इंट्रोड्यूसिंग मिस्टर उत्कर्ष अमिताभ. So Utkarsh is the founder and CEO of Network Capital, one of the world's largest career intelligence communities. He is a writer at Harvard Business Review, Chevening Fellow at University of Oxford, and a World Economic Forum Global Shaper who represented the community at the annual meeting in Davos recently. His new book, The Seductive Illusion of Hard Work, has become a global bestseller. He also writes for Mint, Economic Times, and World Economic Forum. Utkarsh graduated with an MBA from INSEAD Business School, where he was recognized as the Andy Burgess Scholar for Social Entrepreneurship. He is also the torchbearer of Ashoka University's Young India Fellowship. His work experience includes Microsoft, Harley Davidson Motor Company, and Teach for India. Utkarsh is a Resina Fellow and the recipient of the INK Fellowship. Very warm welcome, Mr. Utkarsh Amitabh. उत्कर्ष अमिताभ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं और कोई देरी ना करते हुए आई एम पुटिंग यू ऑन स्टेज टू टेक दिस फर्दर. Thank you very much, Shubham, for inviting me. And I want to congratulate Niti Aayog and the Atal Innovation Mission for coming up with such a path-breaking initiative. In a few days from now, we will be having the India Global Forum in London. And one of the things that I'm going to talk about is how Network Capital has been partnering with Niti Aayog to build and scale Atal Innovation Mission. I'm given to understand that today the mission reaches or impacts the life of almost 1.6 million students or even more. And I think these kind of mentoring initiatives bridge the talent opportunity gap. मैं नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टनरशिप जो करीब 5 सालों से चलती आ रही है वो इंडिया को वर्ल्ड मैप पर डाल सकती है टैलेंट अपॉर्चुनिटी के मिसमैच को ब्रिज करते हुए. Today, I'm going to talk to you about the principles of building a community and scaling your company in a resource efficient way. आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी कंपनी को कैसे स्केल किया जाता है, आप कैसे कम्युनिटी बना के एक अपनी कंपनी को एफिशिएंटली स्केल कर सकते हैं. और इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय पर्सनल स्टोरी ऑफ हाउ आई स्टार्टेड नेटवर्क कैपिटल एंड हाउ नेटवर्क कैपिटल slowly became one of the world's largest mentorship communities. So the first thing I did that when I started Network Capital was to start building a small community. जब मैंने शुरू किया था Network Capital, so I started by asking other people who were in a similar background as mine, who had gone to good schools abroad, to come join me in really sharing what they know. I realized that every person in the world needs a mentor. Every person in the world has something to learn, and every single person in the world has something to teach. तो इन चीजों को अगर आप कंबाइन कर दें, something to learn, something to teach, and someone who needs mentorship, if you combine all of them, that creates a very large opportunity size. So मैंने शुरुआत की अपने दोस्तों से पूछ के, और मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी नेटवर्क कैपिटल को इनिशियल इग्निशन देने की, क्योंकि जो आपके दोस्त होते हैं, जो आप में विश्वास करते हैं, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं. लेकिन how do you get their support? How do you involve them in your mission? So the first step towards inviting your friends and family to support what you're building is to be very
clear with what you want. So, in the first 100 days of network capital, I wasn't doing network capital full time. At that time, my day job was that at Microsoft. And I used to be a part of the business development team. Then I started leading some aspects of it. Then I grew internationally. But that was my main job. Network capital at that time was my passion project. So when I was communicating what I wanted from people, what I was telling my friends and family is that ये मेरा passion project है और मुझे आप लोगों की जरूरत है इसका टैलेंट बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं अकेले सब लोगों को मेंटर तो नहीं कर सकता हूँ। मुझे अगर सब लोगों को मेंटर करना है तो मुझे और लोग अपने साथ चाहिए। मुझे उनका पैसा नहीं चाहिए था, मुझे उनका इंटेलेक्चुअल कैपिटल चाहिए था, उनका उनका दिमाग, उनका टाइम चाहिए था। मुझे चाहिए था कि करीब 100 सवा 100 लोग आए और अपना टाइम दें लोगों को मेंटर करने के लिए, क्योंकि इसीलिए मैंने नेटवर्क कैपिटल बनाया था। The clarity of thought of what you're trying to do and what do you want from people who support you is really important. So मैंने उसे communicate किया एक article लिख के। Writing is something that I enjoy very much, or later in this talk, I will tell you how writing has contributed to making my life meaningful and giving me a lot more professional success than would have happened without writing. So I wrote a long article explaining the need for mentorship. मैंने इस आर्टिकल में लिखा कि भारत को मेंटरशिप को डेमोक्रेटाइज करने की क्या जरूरत है और कैसे हम जो हमें आता है, जो स्किल्स हमारे पास है, उसे हम दूसरों तक कैसे पहुंचाएं। और इस आर्टिकल में मैंने समझाने की कोशिश की कि आपको किसी खास तरह का इंसान नहीं होना चाहिए मेंटर होने के लिए। आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए: हंगर टू लर्न, willingness to share, and a hunger to change the face of India by bridging the talent opportunity mismatch. और ये थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि हर इंसान, हर स्टूडेंट ब्रिलियंट होता है एक डिफरेंट चीज में। कोई खेल कूद में ब्रिलियंट है, कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में ब्रिलियंट है, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ब्रिलियंट है, कोई मैथ्स में ब्रिलियंट है। सो टैलेंट जो है या ब्रिलियंस जो है वो सब में होता है, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। अपॉर्चुनिटीज सबको नहीं मिल पाती हैं। भारत एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, तो हमें अगर लोअर मिडिल इनकम कंट्री से हायर मिडिल इनकम कंट्री या हाई इनकम कंट्री बनना है, तो हम सिर्फ कुछ लोगों को अचीव करा के नहीं कर सकते। वी हैव टू लिफ्ट एवरीबडी, वी हैव टू लिफ्ट द बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड एज वेल। हमें लोगों को दिल्ली में ऊपर करना होगा, और पटना में, लखनऊ में और चेन्नई में, हर जगह। तो ये जो आर्टिकल मैंने लिखा, उससे काफी लोग इंस्पायर हो गए कि ऐसा एक मेंटरिंग मूवमेंट होना चाहिए। और मैंने सोचा था कि 100 सवा 100 लोग आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, एटलीस्ट हम शुरुआत कर सकेंगे ऑपरेशंस की। लेकिन वो आर्टिकल काफी वायरल हो गया। लोगों ने अपने फैमिली को भेजा, जिन्होंने पढ़ा उन्होंने अपने दोस्तों को भेजा, और धीरे धीरे करते करते एक पूरा एक रिपल इफेक्ट हो गया कि कैसे ये एक मेंटरिंग मूवमेंट बाहर बढ़ रहा है और कैसे इसे भारत में अडेप्ट किया जा सकता है, कैसे इसे कंटेक्चुअलाइज किया जा सकता है। और इस आर्टिकल लिखने की वजह से और बहुत क्लियर रहने की वजह से हमारे पास करीब 1000 लोग आ गए। वी गॉट 1000 पीपल who wanted to volunteer their time and their energy and their efforts to help India become the mentorship capital of the world. और ये जब हमारे पास 1000 लोग आ गए, right, then something magical started happening. And let me tell you about that, which I think is the second main point of my presentation. That the principle of scaling is, of course, to one day get to millions and billions of people and impact the lives at that scale. But millions or billions को impact करने के लिए
पहले आपको एक आर्मी बनानी पड़ेगी, 1000 लोगों की, जो आप पे बहुत गहरा भरोसा करते हैं, जो आपकी स्किल्स में, आपके ईमान में, आपके कॉम्पिटेंस में, आपके कॉन्फिडेंस में विश्वास करते हैं कि चीज़ों को आप आगे बढ़ाएँगे सही तरह से। इसे केविन केली, एक वायर्ड के पुराने एडिटर हैं, वो कहते हैं 1000 ट्रू फैन्स मॉडल। और वो समझाते हैं कि आजकल या पिछले करीब 20 सालों में जैसे इंटरनेट आगे बढ़ा है, सो टू स्केल इंटरनेट बिजनेसेस वी डोंट नीड millions of people to support us right away. All we need are 1000 people to truly believe in everything that we do. और आप सब जब लोग अपने टिंकरप्रेन्योर फेस्ट के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएं, तो आप सोचें कि कैसे आप 1000 ट्रू फैंस हासिल करेंगे। तो अगर आपको मिलियंस को इम्पैक्ट करना है, तो पहले आपको 1000 लोगों को इम्पैक्ट करना सीखना होगा। और ये चीज काफी लोग मिस कर जाते हैं। काफी बार उनको लगता है, अरे 1000 तो बहुत छोटा सा नंबर है, इंडिया बहुत बड़ा देश है, 1000 लोगों से क्या होगा। और ये थोड़ा सा गलत है। ये गलत है क्योंकि ये अंडर एस्टिमेट करता है कि डिफरेंस क्या होता है 1000 ट्रू फैंस में और 1 मिलियन सॉर्ट ऑफ फैंस में। People misunderstand the difference between 1000 real believers and true fans and what you call uh, millions of fans who sort of like you, who sort of believe in you. And you can change that. You can really make a dent in the world if you try and capture the market or capture your audience 1000 people at a time. Now, your question would be, how do you get to 1000 people? Who should you reach out to? How do people come to you? How do people find you? And I told you that in my case, it started with writing. But when I realized that, अच्छा, मेरी राइटिंग से लोगों पर मिशन बढ़ रहा है, तो मैंने सोचा कि एक कंटेंट स्टैक बनाया जाए. Let's create a content stack that, of course, shares my vision and my story, but also the stories of other 1000 people who are who got involved in the early days. So, what's the broader lesson for you? That's twofold. One, if you enjoy writing or if you enjoy creating content, and if that is working for you, so create a content stack so that you are able to tell the stories at scale. And the second lesson is, don't stop at telling your own story or your own vision. Involve other people and share their stories. So I started my content stack work by building upon something that I enjoyed, and that was writing a book. This is the first book I wrote, The Seductive Illusion of Hard Work. It is published by a global publisher called Sage, and the founder of the World Economic Forum wrote the foreword of this book. This book is essentially the story of network capital in the early days and how we got started. This book became an Amazon #1 bestseller, and the result was that people from around the world started coming to network capital to join this mentorship movement, to support others build their dreams and build their dreams alongside. सो मैंने ये जो कंटेंट स्टैक की तैयारी की, उसमें आर्टिकल हुआ, फिर बुक डाली, उसके बाद हमने फेसबुक ग्रुप तैयार किया, उसके बाद हमने अलग अलग तरह के चैनल्स इस्तेमाल किए, और मिशन यही था कि हमारे पास एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड करने के लिए पैसे नहीं थे। और दूसरी बात है कि मेरा खुद का विश्वास कि एडवर्टाइजमेंट किया जाए एजुकेशन में, ये बड़ा लिमिटेड है। I believe that education products or early stage businesses can use content and genuine writing and production to really get their points across. And for me, it worked out really well. And at the result of it, it's been, uh, you know, 2 years or less than 2 years since I've been doing network capital full time, and around 5.5 years since I've been doing it, as a passion project. And
I've written two books along the way, and these books have done so much more for me than I would have ever imagined, that any advertisement can ever match. And that is because authenticity, जो असली स्टोरी का पावर है, उसे कोई एडवर्टाइजमेंट मैच नहीं कर सकता है। तो आप सब फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, फ्यूचर टिंकरर्स, क्रिएटर्स, आप अपनी स्टोरी में विश्वास करें, 1000 लोगों को इकट्ठा करें और फिर आगे बढ़े और देखें कि कैसे ये मूवमेंट एक इंसान से लेकर 1000 तक जाता है, 1000 से लेकर 100,000 तक जाता है, 100,000 के बाद मिलियंस में जाता है। तो आप मिलियंस पे पहुंचेंगे, लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको धीरे 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 सफर तय करना पड़ेगा। They say, right, a million mile journey begins with the first step. एक मिलियन किलोमीटर की, मिलियन माइल की जर्नी पहले कदम से शुरू होती है, और पहला कदम अगर आप ऑथेंटिसिटी में रूट करके कहेंगे और केयरफुल रहेंगे, एडवर्टाइजमेंट में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने पैसे हैं और आप उन पैसों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सही डायरेक्शन में। तो ये ध्यान रखिए, एज एन एंटरप्रेन्योर आपको हमेशा देखना होगा एक टर्म का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड टाइम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कंटेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड एनर्जी। ये आपको हमेशा एज एन एंटरप्रेन्योर रिसोर्स और टाइम और एनर्जी को मैच करना होगा, क्योंकि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पास बहुत टाइम है, बहुत पैसा है, बहुत एनर्जी है हर समय। ये सब फाइनाइट चीजें होती है, एंड यू मस्ट कंजर्व देम प्रॉपर्ली। ओके, सो आई होप आपको अभी तक जितना मैंने बोला समझ में आ गया होगा। लेट मी रिपीट ताकि आप रिवाइज कर सके। सबसे पहला, अपनी स्टोरी को बताएं। दूसरा, 1000 ट्रू फैंस इकट्ठा करें। तीसरा, एक कंटेंट स्टैक बनाएं और ऐसी चीजें करें जो आपको एनर्जाइज करती है, क्योंकि एनर्जी और टाइम फाइनाइट होते हैं, और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा जैसे आप आगे बढ़े। ठीक है, इसके बाद जब हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आ गया और हमने नीति आयोग से पार्टनरशिप कर ली, और हम बहुत ये अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन से, यूनाइटेड नेशंस, बड़ी बड़ी कंपनियों सबसे पार्टनर करने लगे, हमारे आर्टिकल्स छपने लगे मेजर न्यूज़पेपर्स में, और लोग जानने लगे कि ऐसी कोई जगह है जहां पे आप जाके अपने करियर कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, जहां पे आप जाके मेंटर्स को फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पे आप जाके अपने आप को रियली एक्सेलरेट कर सकते हैं प्रोफेशनली। तो लोग अपने दोस्तों को बताने लगे और अपने दोस्तों को इनवाइट करने लग गए एट स्केल। एट स्केल इज द कीवर्ड। पहले भी लोग दूसरों को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन क्या होता है ना कि जब एक बार मोमेंटम आ गया, जब एक बार लोगों को पता लगने लगा कि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, then people start inviting everybody they know quickly. In startup terms, people call this scale or product market fit. And this is really important for all of you to keep in mind, because the difference between a company that works or a platform that works and a platform that doesn't is often product market fit. कई बार लोगों को फंडिंग मिल जाती है, कई बार लोग हजारों लाखों रुपए लगा देते हैं एडवर्टाइजमेंट में, बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट मार्केट फिट कभी आता ही नहीं है। और ये आता है तो असली मैट्रिक्स पे नहीं आता है, और बस दिखाने के लिए आता है। मेरा मन है कि आप लोग सीरियस रियल एंटरप्रेन्योर्स बने, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो प्रॉफिट, लॉस, इम्पैक्ट समझे। ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं कि जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, पैसे उड़ा रहा है और किसी चीज़ का ध्यान नहीं रख रहा है, ये कैसे कंपनी एक दिन प्रॉफिटेबल होगी, लोगों को इम्पैक्ट करेगी। सो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर को आई कॉल देम स्क्रैपी एंटरप्रेन्योर, अ पर्सन हू इज कॉन्शियस अबाउट व्हाट दे आर स्पेंडिंग,
measuring the return on invested time, capital, etc., and keeping the customer at the forefront. ये तीसरा पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखें, that you have to know who you are serving. You know, when I was studying at business school at INSEAD in France or at Wharton in the US, one of the key lessons I took was always understand which business are you in, because it's not straightforward to figure out whether you're, a company in industry X or a company in industry Y. Are you serving customer X or are you serving a completely different audience? So network capital on that front was something completely complex. There was a community that we had built. On top of the community, we had created interesting content. Once we had the community and the content, then we put a business layer or a business model of subscriptions. तो हमने पहले कम्युनिटी बनाई, फिर उस पर कंटेंट डाला, फिर बिजनेस मॉडल की तैयारी की। ठीक है, तो इसमें ये एक खास तरह का है, लेकिन हमें समझना पड़ा कि हम हैं किस चीज की कंपनी। हम एजुकेशन कंपनी है, हम प्रोफेशनल नेटवर्क है, हम कंटेंट कंपनी है, हम ये तीनों चीज है। हम किसको सर्व कर रहे हैं? हु इज आवर रियल कस्टमर? इज इट द टीचर? इज इट द स्टूडेंट? इज इट द प्रोफेशनल हु कम्स टू गिव एडवाइस? और ये जब हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि हम किसको सर्व कर रहे हैं और किसको सर्व करना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया चीजों को हाँ बोलना और चीजों को ना बोलना। सो आप लोग भी अपने आप से पूछे कि आपका असली कस्टमर कौन है और आप उस कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस कि आपका कस्टमर खुश रहे आपसे। क्योंकि कस्टमर अगर खुश है, if your customer is delighted with the experience that you're providing him with your service or your product, again, they are likely to tell their friends, they are likely to become your strongest ally. And in a way, the thousand true fans model is all about customer delight. The people who read my book and the people whose lives hopefully was changed for the better because of this book will never forget the impact that my words had on them, because they will remember always the feeling that they had once they went through it, the experience that they had once they learned from it. So, as an entrepreneur, you have to create these moments of magic. And once you do create these moments of magic, you need to document them and you need to figure out a way to scale these moments of magic. And this is often lost when companies scale. Many times, companies are great at keeping customers happy and delighted in the early days. शुरू में तो सब बहुत कहते हैं कस्टमर इज किंग, कस्टमर इज क्वीन, बट जब एक कंपनी एक सर्टेन स्केल पर पहुंच जाती है, जब उनके पास कस्टमर आ जाते हैं, जब वो इनिशियल डे से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, तब सब लोग कस्टमर्स को कम याद करते हैं। And the broader lesson that you want to keep in mind is that never forget the people who helped you in the early days, because you will need their support forever, and it's also the nice thing to do. So, me as an entrepreneur who's building an education and mentorship company, I will never forget the first 1,000 people who came forward to support the mission and whose support was integral in bringing network capital to the level it is today. Today, we are backed by, Facebook, a global tech giant. We've been featured in Harvard Business School, Harvard Business Review, TED, World Economic Forum. हमें फेसबुक से फंडिंग मिली है, हमें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में, टेड में, हर जगह हमारा मैसेज पहुंचा है। और ये मैंने अकेले नहीं किया है, एक बड़ी टीम है, एक हमारे 1,000 ट्रू फैंस हैं, उन सब ने मिल के इस मिशन को एक सर्टेन लेवल पहुंचाया है। तो इन लोगों को हमेशा ध्यान रखना होगा हमें, और इन्हें हमेशा याद दिलाना होगा कि ये हमारे मिशन के लिए इंटेग्रल थे
इंटेग्रल है और इंटेग्रल रहेंगे, which means that they are integral and important to us before, they are integral today, and they will be integral tomorrow. It doesn't mean that you can't give them feedback. It doesn't mean that they can't improve. But the broader lesson is that these people are important to your present, past, and future. And keep that in mind. Many people who scale don't. And one, that's not a nice thing to do. And two, just strategically speaking, you will pay a big price of ignoring your most loyal customers. Right? Now, let's move on to finding other people who you will work with in order to take your platform international or to grow your customer base beyond your target audience. सो नेटवर्क कैपिटल के शुरू में कस्टमर्स ज्यादातर यंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स थे. Most of the people who came to us in the early days were students, young professionals doing interesting things. So we said that we want to grow to include people all around the world, not just the US, not just Western Europe, but people across the world. Because I wanted to build a global mentorship company with, of course, roots in India. But the fact that it wanted to be global was important to me. That's also why I'm so blessed that World Economic Forum founder wrote the foreword of my book and has been just a big supporter of all the initiatives that we've been doing. Now, to do that, we had to go to country after country, city after city. Again, not having too many resources, not having too many people. शुरू में अब नेटवर्क कैपिटल के पास एक टीम है, बट शुरू के कुछ सालों में ये मेरा एक पैशन प्रोजेक्ट था जो मैं ज्यादातर अकेले मैनेज करता था. कई बार मेरे दोस्त हैरान रह जाते थे कि ये हो कैसे रहा है, एक इंसान इतनी बड़ी कंपनी चला कैसे रहा है. ना मैं अकेले नहीं चला रहा था, लेकिन हाँ, आई वॉज द फेस ऑफ द कंपनी, विच मीन्स दैट आई वॉज रिस्पॉन्सिबल for everything negative, and I was also responsible for good things that happened to the company along the way. So that is something that I always remind myself, that when you take big responsibility, you should be prepared for getting a lot of positive energy and a lot of negative feedback as well. And that happened. No scaling is smooth, but when we went beyond India to other countries, occasionally there were differences of language, differences in which education was taught, differences in the way mentorship was understood. और हमें अपने आप को कल्चरली अडेप्ट करना पड़ा डिफरेंट कंट्रीज में. जैसे कि फ्रांस में जो कल्चर है मेंटरशिप को लेकर, कंटेंट को लेकर, वो बहुत डिफरेंट है अमेरिका से या इंडिया से. और हर कंट्री में जब आप एक्सपैंड कर रहे हैं, आपको ध्यान देना होगा कि उस तरह के लोग वहां पे चाहते क्या हैं. हमेशा कीप द कस्टमर एट द forefront of all your pursuits. और इस कल्चरल अडेप्टेशन को समझने के लिए मेरी एमबीए एजुकेशन काफी काम आई. क्योंकि जब मैं इंसियाड में अपनी क्लास में बैठा था या वॉर्टन में अपनी क्लास में बैठा था, या अभी जैसे ऑक्सफोर्ड में हूं मैं, तो यहाँ पे करीब 50-60 नेशनैलिटी के लोग तो मुझे करीब एक हफ्ते में दिख ही जाते हैं. इंसियाड में फ्रांस में मेरी क्लास में करीब 100 कंट्रीज के लोग थे. तो इन अ वे लगता था कि माइक्रो यूनाइटेड नेशंस है, या ये तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही रेप्लिका है. और उन लोगों के साथ काम करके मुझे समझ आया कि अच्छा, डिफरेंट कल्चर्स के लोग डिफरेंट तरीके से काम करते हैं. लेकिन जब आप एक बार इस कल्चरल डिफरेंस को या कल्चरल सिनर्जी को अगर आप समझ जाएं, तो आपका लॉन्ग टर्म काम काफी आसान हो सकता है, और आपको काम में मजा भी ज्यादा आएगा जब आपको लगेगा कि आपके एलाइज और टीममेट्स डिफरेंट देशों के हैं. उस समय मैंने डिसाइड किया कि एक ग्लोबल रीजनल एम्बेसडर प्रोग्राम किया जाए और एक ग्लोबल कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया जाए. कहने का मतलब, every major city in the world, whether it's New Delhi or Oxford or London or Lucknow, will have a regional leader appointed by Network Capital at the early days,
that person would be voluntary and that person will nominate himself or herself, और बाद में अगर उसमें जरूरत पड़ी तो हम इसे फॉर्मलाइज कर सकते हैं, हम उसे कि पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, जैसा भी कहना चाहे हम कह सकते हैं। तो ये रीजनल एम्बेसडर प्रोग्राम से क्या हुआ कि हर सिटी में दुनिया भर लोग इकट्ठा होने लगे नेटवर्क कैपिटल मिशन को लेकर। और अगेन उस चीजों में मेरे आर्टिकल्स जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में आए या मेरी किताब जो मैंने आपको दिखाई, इन सब से काफी फायदा हुआ, क्योंकि लोग जो आ रहे थे वो कई बार आर्टिकल पढ़ के किताब पढ़ के आ रहे थे, तो दे हैड अ लॉट टू डिस्कस। और जो कम्युनिटीज फॉर्म होती है ना शुरू में, दे नीड एन ऑर्गेनाइजिंग यूनिट, they need to know why they are coming together. So my communities were very clear that they are all coming here to seek mentorship, to learn from each other, and to find connection. In the modern day, in the technology era, many times there is loneliness. People are not able to connect with people they want to connect with. And Network Capital, in addition to being a career coach, a mentorship service, also became like a home for so many students and young professionals who were away. And when these clusters started forming in different cities, तब बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज हुई। जिस क्लस्टर्स में ये लोग काम करते थे ना, these young professionals, they were working in different companies, and when they started coming to our meetups, to our offline events, the companies that they used to work for, जिन कंपनीज में हमारे कम्युनिटी मेंबर्स काम करते थे, वो पूछने लगी ये है क्या चीज, हमारे एम्प्लॉयज कहाँ जा रहे हैं शाम में, और किससे मिलने जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। और क्या हुआ कि उसके उस समय हमारे को companies, different companies in different parts of the world started reaching out to us, saying that, hey, can you do mentorship, employee development for us at scale? Can you run these mentorship programs for the company itself? And that was the start of the way in which our B2B expansions was planned. तो ये थोड़ा सा एक्सीडेंट कह सकते हैं या थोड़ा सा हैप्पी सेरेंडिपिटी कह सकते हैं कि जो हमारा बी टू बी लेयर था ना, या बिजनेस टू बिजनेस का बिजनेस मॉडल था, this happened largely through our community members because they became real champions of our mission and our vision within their respective companies. So आज we have almost 25 top corporates and very high growth startups part of the Network Capital B2B plan. And all of that was only possible because our community members championed our cause in their company. So इससे आप क्या सीख सकते हैं? आपने इससे क्या ब्रॉडर लेसन लिया कि कई बार अगर बिजनेस के नए ऑफशूट्स या नए डायरेक्शंस आने की जरूरत हुई, तो आपको बस ध्यान देना होगा कि आपका कस्टमर कर क्या रहा है, और क्या आप एक ऐसा मूवमेंट तैयार कर सकते हैं जहां पर आपका कस्टमर एडवोकेट करे अपने दोस्तों में, अपनी कंपनीज में, अपने प्रोफेशनल नेटवर्क्स में, क्योंकि इस तरह का वर्ड ऑफ माउथ इज द one of the most effective ways of scaling. And what is not the most effective way of scaling in the early days, कि बिना मिशन विजन को सोचे हुए ऐसे ही रैंडमली पैसे डालना शुरू कर दिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, या इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लाइक और ये सब करने के लिए। ये सब चीजें गिमिक्स होती हैं अर्ली डेज में। इन सब चीजों का फायदा होता है एट द राइट टाइम, एट द राइट स्टेज। लेकिन आप लोग अगर कुछ शुरू कर रहे हैं अर्ली डेज में, तो आपका काम बड़ा सिंपल है। जो आपने फ्रेंड्स और फैमिली में आपसे बात करते हैं, उनको बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। स्टेप वन, जब उनको बताया तो धीरे धीरे कंटेंट स्टैक तैयार करिए। Once you have the content stack ready, do whatever you can to get to 1000 true fans. Once you do get to 1000 true fans, don't
forget that they matter, they will always matter. Learn ways to surprise them, to delight them in interesting ways. Remember the people who made you successful or who were important for your success in the early days. That will be the difference between a company that lasts and a company that does not. आज भी मैं ऑक्सफोर्ड में हूँ, डावोस में हूँ, अमेरिका में हूँ, कहीं पे भी हूँ, अगर मुझे कोई फोन करता है या कोई मेल करता है जिन्होंने अर्ली डेज में नेटवर्क कैपिटल की मदद की, मैं उनका फोन रिसीव करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, और मेरा मिशन है एट अ पर्सनल लेवल to impact the lives deeply and meaningfully of a billion people. एक बड़ा मिशन है, लेकिन to get to a billion people, again, I need to remember my 1,000 people who really supported me. और इन लोगों को अगर मुझे सपोर्ट करना है तो मुझे उनको कॉन्स्टेंटली याद रखना होगा और इनकी सपोर्ट लेनी होगी नए नए बिजनेस ऑफशूट्स बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने आपको बताया, द वे आर B2B वर्टिकल एरोज, द वे वी एक्सपैंडेड टू डिफरेंट कंट्रीज, और इन सबको अगर आपको टाई करना है, so how what is the ultimate principle of scaling in a resource constrained way? It's just to pay attention to what your customer is doing, who your customer is, and how his or her needs are changing based on time, based on where they live, based on what culture they come from. And if you learn to observe carefully, learn to observe like a sociologist, and learn to delight like an entrepreneur, you will do something really interesting. One of my mentors a few years back told me that the most successful people in the world are often those who make others successful. And hearing this gave me so much confidence and happiness. Happiness because I knew that I love doing it. I do it on a daily basis. I love making other people succeed. It also gave me a lot of confidence because ultimately, network capital is about making a billion people more successful by enabling them with new mentorship and professional development opportunities. Ultimately, the Network Capital Niti Aayog partnership for Mentor India Tinkerpreneur is about one day making billions of children more successful, more happy with the careers that they are choosing. So it's all about making others successful. Niti Aayog, the mission driven organization by the government, will achieve its charter if all of you do interesting things. Network Capital will achieve its charter, its mission, will achieve the product market fit or whatever if you all become successful. And how will you all become successful? आप लोग कैसे सक्सेसफुल होंगे? जब आप दूसरों को सक्सेसफुल बनाने एट स्केल का तरीका पाएंगे. When you'll find a way to make other people succeed at scale, and those other people are your friends, are your family, and are your customers. I wrote my books, I write my articles, I build my company keeping one thing in mind. How do I make others successful? And doing this has made me also quite successful. It has also made me quite happy. It has taken me around the world and it has made my life rich and meaningful. Rich in terms of experience and meaningful in terms of outcomes. I just want to thank Niti Aayog and Atal Innovation Mission team for organizing, the Tinkerpreneur Fest and everything that they do. And I want to thank all of you, my dear students, for being part of this mission and trying to really redefine what aspiration, ambition, and mentorship mean in the 21st century. If you ever want to reach me or if you want to connect with me, you can do that on LinkedIn, Twitter, or Facebook, or whatever platform you use. And I'd be very happy to learn from you, learn about your story, and I'll be very interested to see how you're enjoying or learning from the Atal Innovation Mission. Dhanyavad. Thank you very much for your time.
यहाँ सुबह सुबह है, 7:30 हो रहे हैं ऑक्सफोर्ड में। मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आपने 1 घंटा निकाला मेरे लिए, and it made my day into a more meaningful one. Take care and thank you very much. Yeah. Thank you so much, Utkarsh, for this lively session. And I guess students are really enjoying. We will see more number of students would be seeing this session after some time, and they might reach to us again. And I will forward you their questions as it is. But Sure. for now, we have two queries. एक हिंदी में एक इंग्लिश में है, and parallelly we will take care of it. तो एक है कि सर, क्या नेटवर्किंग ही एक जरिया है स्केल अप का? स्केल अप करने के क्या और भी एवेन्यूज हैं? क्योंकि अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी देखूं तो मतलब मैं इतनी फ्रीक्वेंट नेटवर्किंग नहीं कर पाता और इतनी जल्दी नेटवर्किंग नहीं कर पाता, बट मैं अपने बिजनेस में एक साउंड और एक जगह पे पहुंच चुका हूँ। तो क्या स्केल अप करने के और भी एवेन्यूज हैं? जी, बिल्कुल। मैं खुद भी नेटवर्किंग नहीं करता हूँ। मैं लोगों से दिन भर मिलता नहीं रहता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ़ बहुत बिज़ी है। देखिए, मेरी सुबह शुरू होती है ऑक्सफोर्ड में क्लासेस से और उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ। साइड बाय साइड नेटवर्क कैपिटल का बिज़नेस चल रहा होता है। इसके अलावा मैं रोज़ लिखता हूँ, नई किताबें लिखता हूँ। मैंने पिछले 2 सालों में 2 किताबें लिखी हैं और मैंने करीब 20-25 आर्टिकल्स लिखे होंगे इंटरनेशनल जर्नल्स के लिए। तो मेरे पास लोगों से मिलने का टाइम बड़ा कम होता है। नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं कि आप लोगों से दिन भर मिलते रहें और हाथ मिलाते रहें। नेटवर्किंग का मतलब होता है आप इंटरेस्टिंग काम करें। इस किताब ने मुझे लाखों लोगों से quote अनquote नेटवर्क करने के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ दी है क्योंकि लाखों लोगों ने इस किताब को पढ़ा है और मुझे मैसेज लिखा है। तो आपको अगर बिज़नेस बढ़ाना है तो लोगों से मिलना-जुलना तो होता रहेगा, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग करिए। Networking, the best networkers are not people who keep meeting people. The best networkers are are the people who do interesting things. तो अगर आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आप नेटवर्किंग वर्ड को ही भूल जाइए। इंटरेस्टिंग चीजें करिए और लोगों को बताइए कि मैंने ये इंटरेस्टिंग की है। अगर आप रैंडमली हर कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए बिना कुछ ऐड किए, फिर फिर आपका आपका फायदा क्या है वहां पे होने का? कोई भी कर सकता है। इट्स नॉट डिफरेंशिएबल इनफ। मैं भी कुछ कॉन्फ्रेंसेस जाता हूँ, लेकिन यूजुअली उस कॉन्फ्रेंसेस में नेटवर्क कैपिटल पार्टनर होता है या मैं स्पीकर होता हूँ या मेरी किताब लॉन्च हो रही होती है या नेटवर्क कैपिटल का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा होता है या मेरा कोई मेंटर बोल रहे होते हैं वहां पे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एसेंस ऑफ स्केलिंग इज डूइंग इंटरेस्टिंग थिंग्स। नेटवर्क कैपिटल इज I think a meaningful company, a successful company, but most importantly, it is an interesting company run by interesting people. और ये आपको खुद भी ध्यान रखना होगा और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप कंपनी को ईमान से चलाएंगे और अपने आप को इंटरेस्टिंग कामों में इमर्स करेंगे तो आपके पास बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। Thank you, Utkarsh. Another question is uh, probably a kind of a doubt clearance kind of thing. Okay, Utkarsh, you have a very profound knowledge, whatever you are doing. You have a fantastic background as well. And maybe due to this, you are able to network effectively. But see, from our perspective as of now, where I am standing as of now, I am a little kid and I am just doing some bit of tinkering around my project. And what do you think in my long journey, if I have to effectively develop my product, what are your tips to me? Yeah. So you are a student and you should know that that's a superpower. Today's students, with the right mentorship, with the right support, can really scale themselves and scale their companies. So, Pehla, you can take advantage of the Niti Aayog network capital ecosystem. You tell us what you need, and we will provide you the platform because your success is our success. We want to play a role in making sure you get to the level you deserve.
The second is that you cannot be somebody else. Your superpower is try to be the best version of yourself. So just the way, I cannot be you, you cannot be me. We are both different people with different skill set, but we can partner up. We can collaborate on different things. And the idea of entrepreneurship or doing something interesting is not to become somebody else, but to figure out allies who can support you in that mission. And the third point, I would say that it's an extension of what I told the person who asked the previous question, is that you'll be surprised that how many interesting opportunities come to people who do interesting things. There is a framework that I keep in mind. It's called luck surface area, and I write about it in my books. Luck surface area is a combination of two things. It's a combination of doing interesting things and telling lots of people. So if you want to enhance your luck surface area, if you want other people to know, more about what you're doing, you have to do interesting things and tell lots of people. Use writing, use the creator stack, use social media platforms if you need to, or just like tell your friends about it. Don't expect that people will come to you just because you are there. You need to make that initial effort. If you're in a wedding or a party, or if you feel that you have 5 minutes, talk to somebody and share what you're interested in. People often find it very interesting to learn what drives other people. So I have found deep connections with people from different cultures, different nationalities, often by discussing what I care about and asking them what they care about. So I use this synergy to strike that balance, and I'm very sure you'll succeed. And if you need anything at all, the Network Capital team, the very inspiring Niti Aayog team, everyone is there to support you. Surely, surely, Utkarsh. I guess this is it for now, Utkarsh. Thank you so much Yeah, for joining us. It was a lovely, lovely session. And yeah, if there would be any more further questions, I would forward it to you over email. We can connect over that. sure, I can forward definitely. your answers to the students or the mentors. Thank you very much, my dear students, the Atal Innovation team, the Niti Aayog team. It's been a pleasure. Bye. Bye bye.